Hello everyone, so this is the problem from mechanical property of solid. This is the problem from mechanical property of solid. So क्लास 11th का जेई का ये चैप्टर है जहाँ से जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो सिंगल फार्मूला बेस्ड आते हैं, विच इज़ वेरी important फार्मूला. I am writing this formula. For example, I am explaining you some concept. If there is a wire, let us consider there is a wire, okay, having cross section area A and length capital L. If we applied a load F there, then there will be extension in length, then there will be extension in the length of the wire. Let us consider this extension in length is delta L. In this case, there is a energy stored in this wire. There is energy stored in this wire due to the work done to change the configuration from this state to this state. So what is the energy or what is the work done? So work done or energy can be given as half into stress into strain into area into original length. So this is the single formula. From this formula we are going to solve two problem in this video series. So keep it in mind, this is the single formula and this is very important. And this question is came into AIEEE 2003 or 2004 somewhere. So what is given? So here given is a wire suspended vertically from one end. So there is a wire which is suspended vertically downward direction में. यहाँ पे एक वेट है, देर इज़ अ वेट ऑफ 200 न्यूटन. ड्यू टू दिस वेट देर इज एक्सटेंशन इन दिस वायर, there is extension in the wire which is 1 mm. So delta L is 1 mm. So I am going to change this into meter. And what is this? This is load. Load means what? A kind of force. Okay. So now we are going to solve the problem. So I am using this formula. So what is the work done in this case, or energy stored in this case? This is equal to half stress into strain into area into original length. If L is the original length. Now half, we know that stress is nothing but force upon area. And what is strain? Strain is change in configuration divided by original configuration. So there is change in configuration is delta L, या change in length divided by original length into area into लेंथ. ओके, सो एरिया से एरिया कैंसिल हुआ, लेंथ से लेंथ कैंसिल हुआ. सो नाउ वी गेट एनर्जी इज इक्वल टू हाफ फोर्स और लोड इनटू डेल्टा एल. सो जस्ट पुट द वैल्यू हियर. हाफ, व्हाट इज लोड? लोड इज 200 न्यूटन. Into what is delta L? Delta L is 1 mm. That means 1 into 10 की पावर माइनस 3 मीटर. सो 2 से यहाँ पे 200 को डिवाइड करेंगे, 200 से डिवाइड करेंगे 2 को तो 100 आ जाएगा. सो वी कैन राइट 10 के पावर 2, 200 को 10 के पावर 2 लिख सकते हैं, एंड 10 के पावर 3. सो दिस इज 10 के पावर माइनस 1 and this is 1/10 and this is equal to 0.1 joule, which is the answer. Now we are going to solve the another problem in this video series. So what is given here? Here given that
स्ट्रेस जो है इसको हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड यंग मॉडुलस इज वाई. So again he is asking about work done per unit volume. So what is the work done? Work done is nothing but half stress into strain into area into length. So look at here, if there is a wire, okay, if there is a wire, this is cylindrical wire. जब भी क्वेश्चन में बोले वायर तो हम सिलेंड्रिकल वायर ही बोलते हैं. सो ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, अगर इसका लेंथ एल है. सो इफ़ यू मल्टीप्लाई एरिया बाय लेंथ वी विल गेट द, इफ़ वी मल्टीप्लाई एरिया बाय लेंथ वी विल गेट द वॉल्यूम. सो नाउ वर्क डन डिवाइड बाय दिस वॉल्यूम भी will be half stress into strain. ये मल्टीप्लाई में है, इसको दूसरी साइड भेजा तो ये डिवाइड में हो गया. सो दिस इज द वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम. दिस इज द वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम. और यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ v इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब इन दिस केस, और डिवाइड बाई v. बोथ हैव द same physical significance here. Now half into stress को हम now in the given option we can see, in the given option there is y, and in this question are also given y. So and there is no strain term, so we have to eliminate this strain. So we know that Hooke's law, stress proportional to strain. Now this proportionality constant, इस proportionality constant के जगह पे क्या आएगा, एक constant आएगा which is known as modulus of elasticity. So we are talking about the longitudinal stress. So there is young modulus in this case. So this will be the stress is equal to y into strain. So now we can see that there is no y. There is no y in this case. So what we will do, I am going to multiply and divide by y. Okay, so हम इसको मल्टीप्लाई करिए और डिवाइड किए, तो यहाँ पे देखो y इंटू स्ट्रेन के जगह पे हम क्या लिख देंगे, स्ट्रेस लिख दे देंगे. ठीक है, डिवाइड बाई वाई. नाउ हाफ स्ट्रेस को मैंने एस से रिप्रेजेंट किया तो एस इंटू एस डिवाइड बाई वाई. दिस इज इक्वल टू हाफ एस स्क्वायर बाई 2y. दिस इज नथिंग बट एस स्क्वायर बाई 2y. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें. थैंक यू.